So hi everybody. Good evening. About day after one day off, and today we will be discussing about emotional intelligence. So many times we hear about emotional intelligence. ये emotional intelligence है क्या आखिर? Emotionally strong होना. That is what we understand about emotional intelligence. लेकिन actually में कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग इमोशनली? सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि है क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस. सो लेट अस सी कि क्या है एंड कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं. Not many people, unfortunately, understand what EQ, the term, is really about, or why it has become so popular over the last several years. Many scientific studies have been conducted over the years and have discovered that emotional intelligence is more important in life than the average intelligence that is measured by the IQ scale. ये तो सबको पता है कि IQ से EQ is more important. सब कुछ आता होगा एंड आपको इमोशनली हैंडल ही नहीं करने आता होगा. कोई भी डिस्ट्रेस आ जाए, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज, राइट? तो फिर आप क्या करोगे अपने टैलेंट का, राइट? सो many studies have proven that the common intelligence responses account for less than 20% of our achievements and successes in life, while the other 80% depends solely on our emotional intelligence. इसीलिए ये बहुत ही important है. Everyone from students to CEOs is confronted by not only their own emotions, but the emotions of everyone around them. How you manage these emotions has a significant impact on how other people perceive us, as well as our effectiveness to get things done. तो resourceful influence is that ना, वही हम बात करते हैं कि resourceful influencing क्या है आखिर. It is about getting things done, चाहे कैसे भी हो. So the more ethical you are, the more celebrated a leader you will be. आपको नहीं लगता कि आप बहुत ethically किसी चीज को करते हो, and then you establish your authority also, और उसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं है. You are also very very transparent about whatever you are doing. तो मतलब आप में capability कितना है, that is secondary. How you deal with whatever solution you are giving, वो important है. Success is not about the ultimate outcome, it is about the journey. So how you are better equipped to respond to stressful situations around you with a high degree of maturity. John Mayer, Peter Salovey, and Konstantin Vasily Peterides are renowned researchers that discovered people who have high emotional intelligence tend to become better leaders and are excellent in everything they set out to accomplish. The first person to use the term emotional intelligence was Wen Pine in his doctoral thesis, A Study of Emotion, Developing Emotional Intelligence. तो हमारे कल्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज द पैरामाउंट थिंग. कोई भी इंटेलेक्ट की बात हमारे कल्चर में नहीं करता. इट इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप दूसरे के साथ कैसे पेश आते हो, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. सक्सेस की बात तो लास्ट में आती है, और सक्सेस हमारे लिए कंप्लीट नहीं होता जब तक आप इंटेग्रिटी आपका सही नहीं हो, डिग्निटी आपका नहीं हो. So emotionally intelligent people can harmoniously reconcile what their mind and reason tell them with the voice of their feelings and emotions. ये काफी emotions भी होते हैं. Emotional intelligence तो वही है, अगर रोना आ रहा है तो आप रोते भी हैं, छिपाने की कोई कोशिश नहीं करते. Thanks to this skill, emotionally smart people are self-confident, self-aware, creative and energetic. इनको डर नहीं होता कि बाकी सारे क्या सोचेंगे. They are also much more capable of handling stress and knowing how to get along with others. They are more optimistically approaching their life and don't fear change. They are the people of success. So let us start with
what is emotional intelligence? This is the ability to identify, understand, use, and manage emotions in a positive manner in order to enhance communication, overcome challenges, relieve stress, empathize with others, and diffuse conflict. The scope of emotional intelligence is extensive and covers a variety of aspects in our daily lives, like how we behave and interact with others. When you are emotionally intelligent, you are better able to recognize your own emotional state as well as the emotional state of others. Having a clear understanding of the emotional states of those around you can help you to better relate with them, achieve greater success, form healthier relationships, and lead a more satisfying life overall. Compared to what we know as intelligence quotient or IQ, emotional intelligence is considered more important in attaining success and happiness in both your career and your life. Your ability to read and interpret other people's signals and respond to those signals appropriately will ultimately determine how far you will go in both your personal and professional pursuits of success. This is why it is essential that you develop a high emotional intelligence that will help you understand, negotiate, and empathize with others. Categories of emotional intelligence, इसके categories भी होते हैं. One is self-awareness. It is the ability to recognize your emotions and the impact that they have on not only your thoughts but your behavior as well. Through self-awareness, you will start to understand your strengths and weaknesses and is a critical part of your emotional intelligence. Having self-awareness will also help you to build your self-confidence. The next is self-regulation, is your ability to put impulsive behaviors and feelings under control and is another critical part of emotional intelligence. While self-management doesn't prevent you from feeling emotions, it enables you to have a say in how long a feeling lasts. Learning how to manage emotions in a healthy manner, adapting to changing circumstances, and following through on commitments are just some of the critical aspects of self-regulation. There are several techniques that you can use to keep negative emotions like anxiety, anger, and depression at bay. Some of the methods include meditation and recasting situations in a more positive light. Self-regulation involves self-control, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, and innovation. The third category of emotional intelligence is motivation. Motivation refers to the internal processes that propels you towards a goal. This category of emotional intelligence requires you to set clear goals, have a defined path for reaching out your goals, and a positive attitude. Everyone has a predisposition towards a positive or negative attitude, but with motivation, you can shift how you think to more positive orientation. Every negative thought that crosses your mind can be reframed in a positive way to help you achieve your goals. अभी मैंने आज सुबह सुना है, सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छे के लिए होता है. या आपने ही सुना? So this is a funny thing. तो आपके लिए अगर अच्छे के लिए होता है, and if you can try and find out कि ये क्या अच्छे के लिए हुआ आपके साथ, तो आपको लगेगा कि there is a bigger purpose for you कि अभी जो छोटा सा सक्सेस आपको अगर होता, वो बड़े तरीके से अगर आपको पाना है, कोर्स आपको बड़े तरीके से पाना है, एंड यू डिजर्व दैट. अगर ऐसा वो है तो आपको ये छोटे सक्सेस से शायद आपको डिस्ट्रैक्शन हो, इसीलिए आपको ये फेल्योर मिला so that you can work on a bigger purpose. Okay, आपको पता ही नहीं चलेगा, हमको अपने existing circumstance में पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए bigger purpose क्या है. उसी का जर्नी तो लाइफ है. Finding your purpose is our life. तो वो पर्पस कितना छोटा या फिर कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है बट ये छोटा रह जाता अगर छोटी छोटी चीजों में हमको सक्सेस मिलने लगता. हम डिस्ट्रैक्ट भी होते. मान लीजिए कि आप 100 चीजों में अटेम्प्ट करते हैं, आपको आता है एंड यू आर गुड एट इट, तो आप 100 चीजें करेंगे जो एक दूसरे में कोई मतलब आपकी एनर्जी को जो बहुत क्या बोलते हैं
ये डिस्पर्स कर देगा, तो आप किसी में एक्सेलेंस नहीं हासिल कर सकते ना. सो यू हैव टू फाइंड आउट वन दैट थिंग which will lead you to success. तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो इसलिए बोल रही हूँ कि when a failure comes, it has come with a message कि आपके लिए कुछ और है. You are for something else. वो पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज no you will not be able to find वो take that path to find out, discover that bigger thing, why it has happened. सो मोटिवेशन के कई सारे तरीके होते हैं. एक तो अचीवमेंट ड्राइव होता है, कमिटमेंट होता है, इनिशिएटिव होता है, ऑप्टिमिज्म होता है. मुझे आप अभी बता दो कि आपका कमिटमेंट, इनिशिएटिव, ऑप्टिमिज्म क्या आप नेगेटिव होके आता है आपके पास? नहीं आता. अगर आप गुस्से में किसी और के साथ गुस्सा हाँ दिखा दूंगा करके कुछ कर भी रहे हैं, देन ऑल्सो दैट इज हाफ हार्टेड. आप किसी और को प्रूव कर रहे हो. यू आर नॉट फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस. किसी और से आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो आपके लिए दूसरा भी माइलस्टोन है बड़ा होने का, क्योंकि शेर को सवा शेर हमेशा ही होता है. दैट विल नॉट प्रूव यू टू बी द एक्सेलेंट पर्सन. व्हाट विल मेक यू द एक्सेलेंट पर्सन, द आउटस्टैंडिंग पर्सन, इज हाउ यू डील विद योर लाइफ, योर पर्पस. और आपका जो पर्पस है ना, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पर्पस. सो ये आपके पॉजिटिव माइंडसेट से आता है, एंड दैट कम्स एज पार्ट ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस. द another category of emotional intelligence is empathy. This is your ability to understand the concerns, needs and emotion of others, and it is an essential element of emotional intelligence. Empathy enables you to recognize emotional cues and group power dynamics that can help you respond to the reactions of others more appropriately. People that are empathetic excel at developing others, service orientation, leveraging diversity and political awareness. आपके ग्रुप में कई सारे डायनेमिक्स होंगे, उसको आप सिंगल ट्रैक में कैसे मोबिलाइज करोगे? If you only know and empathetic towards everybody's needs. सबका नीड लाइफ में डिफरेंट है. तो मास्लोस ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, वो नीचे से दैट इज डिफरेंट. आपका सर्वाइवल है, सिक्योरिटी है, एंड लाइकवाइज राइट नाउ मुझे याद नहीं है, बट इट इज अ 5 लेवल. सबके लास्ट लेवल में एक्सेलेंस है, सिग्निफिकेंस है. सो वो सिग्निफिकेंस तक पहुंचने के लिए क्यों पहुंचे अगर आप पूछेंगे, तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी ना, अदरवाइज तो आई क्राइसिस हो जाए. सो अगर आप अपने साथ साथ दूसरे की आइडेंटिटी को भी रिलेट कर सकते हैं एंड एनकरेज कर सकते हैं, देन इट बिकम्स आपको दैट मेक्स यू ए ट्रिमेंडस लीडर. Next is the social skills. These are the last category of emotional intelligence. These are relationship management, is the ability to develop interpersonal skills, बहुत important है, that can significantly boost your chances of having a successful career and life. Being a global economy with the ease of access to information and technical knowledge, it is essential to have people skills if you want to be able to understand, empathize, inspire and work well in a team settings. So this is the skill with which you will influence others. You can communicate, you can build bonds, and you can lead. That is why resourceful influence is so very important. And resourceful influencing का एक बहुत ही बड़ा important aspect है social skills. Social skills में मैं पार्टी करने के लिए नहीं बोल रही. If it requires then पार्टी भी कीजिए, बट आप किसी को इन्फ्लुएंस अगर करना है तो आप उसके काम आना चाहिए, राइट? किसी को आपने वो जिस भी लेवल पे है उस लेवल से वो बड़ा होगा आपके साथ घुलने मिलने से, आपके सर्कमस्टेंस, आपके सर्कल में आने से. अगर ये आप प्रूव कर सकते हैं देन यू कैन इन्फ्लुएंस. सो ये सारे उसके बेनिफिट्स तो हैं ही.
पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच required. It provides you with the ability to manage your affairs and those of others successfully. Thinking skills भी आपके डेवलप होते हैं. It solves आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर थिंकिंग स्किल्स. आपके थिंकिंग प्रोसेस में काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज शायद होंगे ड्यू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. ओल्ड डिफिकल्टीज may be there. So through emotional intelligence आपकी strategic thinking आ सकती है. Ability to inspire and motivate your team while your own opinion is not important. आपके अपना खुद का ओपिनियन जो है that is part of the thing. पूरा एंटायर जो सिचुएशन है उसको आप ऐसे देख रहे हो ना विथ योर पास्ट एक्सपीरियंस. बट पास्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे का डिफरेंट है आपसे एंड दे आर ऑल्सो वॉचिंग द सेम थिंग विथ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अगर आपको ये सारे पर्सपेक्टिव पता चल जाए देन योर थिंकिंग प्रोसेस विल बी काफी स्ट्रेटेजिक हो जाएगा. प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी आपके इम्प्रूव हो जाते हैं बिकॉज यू आर एबल टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. That actually influences, encourages, enhances your leadership capability, and because you keep happy, because you have been without stress, without conflict, so आपकी health भी बहुत अच्छा रहता है. Mental well-being तो अच्छा रहता ही है because your outlook has now improved and you are not bothered about your mood swings and anxiety and depression and all that. Conflict you have overcome because of this skill, and ultimately it leads to success. Now, what is the first thing? How to identify emotional triggers and strategies for dealing with them. Emotional triggers are the thoughts, feelings, and events that can evoke an automatic response. While these reactions might seem involuntary, in reality, like everything else we do, the response is a matter of choice. So, आपको क्या पता है कि आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली ये हो रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बट यू कैन मेक ए चॉइस अबाउट हाउ यू फील. इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ हाउ यू रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस then you will need to learn how to identify your personal emotional triggers. So how to identify your emotional triggers? Rather than letting minor aggravations make you run for the hills, you need to learn how to take charge of your feelings. एंड इमोशनल स्ट्रेसेस कैसे आते हैं कि these are anxiety and fears along with the personality traits like suspiciousness, pessimism and perfectionism. So जब स्ट्रेस और एंजाइटी और ये सब आते हैं तो फिर चेक कीजिए कि आप क्या आपको बहुत सस्पिशियस होने का टेंडेंसी है, पेसिमिस्ट हैं आप, थोड़े से परफेक्शनिस्ट हैं. फैमिली स्ट्रेसर्स. सो घर में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके कई सारे स्ट्रेस होते हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट. वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं फैमिली सेटअप में, सिचुएशंस में. सोशल स्ट्रेसेस, कोई आपके साथ कुछ थोड़ा सा अलग से बिहेव कर दिया, डिफरेंट देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड, देन ऑल्सो सोशल सेट में चेंज हो सकते हैं. किसी ने मुझे बोला कि उसके दोस्त सारे काफी आगे बढ़ गए हैं because of their background. They had a rich background and they had the resources to move ahead. इनके नहीं है तो फिर ये मूव नहीं कर पाते. So this also makes you restricted, constrained, and इससे भी आपका माइंड थिंकिंग स्टाइल भी छोटा हो जाता है. Recognize them. New location, starting a new job, getting married, having children are the change stressors. ये change management के है. Work stressor, work अगर बढ़ गया है, आपकी responsibility बढ़ गई है, then also this होता है. कैसे डील करेंगे? एलिमिनेट कर दीजिए. कुछ स्ट्रेस तो यूजलेस है. इफ यू कैन लर्न, आप उसी के साथ चलते हैं. कुछ हो चुका होता है उसको हम सोचते रहते हैं कि ये क्यों हो गया छोड़िए. तो व्हाई इट हैपेंड वो सोच लीजिए एंड देन मूव अहेड. इससे आपका एलिमिनेट हो जाएगा. थोड़ा सा और तरह से दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड देन if you have an alternative situation, then वो coping mechanism कहलाता है
किसी और से बात करके भी स्ट्रेस कम होता है, लेकिन बात करने से wherever you are directing your energy, it increases. So जितना हो सके keep it to yourself or maintain a journal, a diary, so that you can write out why these things matter to you. आप देखेंगे राइटिंग करने से जब आप बात कर रहे हैं तो माइट बी इट विल इंक्रीज, स्ट्रेस विल इंक्रीज, आपके एंजाइटी बढ़ेगा, आपको आपका गुस्सा ज्यादा होगा. बट व्हेन यू राइट डाउन इन ए जर्नल, कहीं भी अगर आप लिखोगे देन आपको भी लगेगा कि दिस वाज इट, मतलब इतना दिस इज नॉट वर्थ इट. सो आप वो कर लीजिए. जर्नलिंग इज द बेस्ट वे टू हैंडल योर स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन. Why you need to take responsibility and set personal boundaries? ये दूसरा ट्रिक है आपके. Whatever has happened to you in your life, the bottom line is that you are ultimately responsible. If you are looking for happiness and success in your personal and professional life, you must embrace this principle. When things go wrong in your life, there is always a temptation to blame others for your misfortune. But that won't help you find happiness in your life. If anything, it will ultimately worsen the situation and will end up sinking you into further irresponsibility. So, take responsibility for your actions, choices, and direction in life. And that will be a very powerful and intelligent way that you can deal with the issues you face in life. The moment you stop taking responsibility, the perspective you have in your life will shift. And more often than not, you will start to see yourself as a failure because you have allowed yourself to blame others for your problems. So when you start taking responsibility and for the outcome of your choices, whatever you have made, even when events happen that aren't within your control, you have the power to determine how you will react to those events. You can either make a disaster out of a situation and use the challenges in life as a ladder to reach a higher level. आप ही डिसाइड कर सकते हो ना कि आप ही ने चॉइस किया, उसके ये रिजल्ट आए. अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हाउ डज इट मैटर? अच्छा हुआ तो सक्सेस है आपके लिए, बुरा हुआ तो डिलेड सक्सेस है, isn't it? So responsibility कैसे लिया जाए? तो किसी और को करना छोड़ दो. फीडबैक ले, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले और उसके अनुसार थोड़ा सा खुद को सुधारने की कोशिश करें. वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी. प्लान योर लाइफ कि by putting a plan in place how you want your life to run, you can successfully take control of your life and eliminate the temptation of blaming others. Recognizing your choices, बहुत सारे choices होंगे आपके पास किसी भी situation को handle करने के लिए. उसमें से एक या दो चॉइस कर सकते हैं अभी और वो चॉइस लीजिए. That is what you can do to move forward. How to set your personal boundaries? तो बाउंड्रीज क्या है? Saying no is one of those boundaries. हम पॉपुलर होने के चक्कर में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं एंड देन उसी में लग जाते हैं एंड देन इट क्रिएट्स स्ट्रेस. एंड अपना जो नीड है, आपको टाइम चाहिए, आपको थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए, आपको थोड़ा सा कुछ और करने का मन है, तो वो आप बोलिए कि ये आपका आप अभी करना चाहेंगे ये स्ट्रेस के बदले. अगर ये आप नहीं लेंगे काम तो आपके पास टाइम बचेगा और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये आपको लेना पड़ेगा. कोई कुछ दिनों के लिए शायद आपसे नाराज हो जाए क्योंकि आपने ना बोला, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे. अगर आप उनको नाराज नहीं करोगे तो अच्छे से बोलिए कि व्हाई दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड. अगर आपका अच्छा हो रहा है, अगर वो सामने वाला आपको समझता है, देन he or she will understand your need to be yourself. और आपका टाइम आपके लिए वैल्यूएबल है. एंड जो भी आप बोल रहे हो उससे आप उसी में स्टे कीजिए. होल्ड दैट ग्राउंड. अगर आप चेंज करते रहेंगे तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा एंड आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा कि थोड़ा सा बोलने से या फिर थोड़े से ऐसे या वैसे करने से ये तो समझ जाता है.
How to raise your emotional intelligence? The good news is you can raise your emotional intelligence. And इससे क्या होता है? You will be able to expand your range of choices when responding to new events, integrating emotional memory into the decision-making process, and past mistake थोड़ा सा avoid. Key skills of emotional intelligence. Then rapid stress reduction. तो इसको कैसे करेंगे? For you to remain focused, balanced, and in control, you need to learn different techniques for how to calm yourself down, regardless of the level of stress that you are currently facing in your life. Stress busting is one of the methods that you can use to cope well when faced with a stressful event. Be aware of your physical response. आपका body language से भी लोगों को काफी कुछ पता चलता है आपके So carefully analyze how your body feels when you are under pressure, because this will help you to learn how to regulate tension when stress occurs. People have very different reactions to stress. While some might become angry or agitated when faced with a stressful situation, others will become withdrawn and depressed. So आप कैसे हो? आपका behavior कैसे हो रहा है? So if you are the person who tends to become angry, then आपको ये मैकेनिज्म थोड़ा सा लेना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या करने से आपको एंगर कम आता है. सो स्ट्रेस बस्टिंग टैक्टिक्स क्या सब है? सबके डिफरेंट है. सो द फर्स्ट थिंग इज म्यूजिक होता है. मे बी सी इफ म्यूजिक हेल्प्स यू. The ability to connect to your emotion is a critical part of understanding yourself. सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमको अपने आप के साथ प्रॉब्लम है. Because the way we want ourselves to be, वो हो नहीं पाता. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि we are disconnected from our emotions. कुछ एडवर्स इफेक्ट है अपने चाइल्डहुड में, या फिर कुछ हम खुद को नहीं रेस्पॉन्ड करना जानते. तो वो जो फीलिंग्स है अपने अंदर, वो तो है, बट वी आर अनअवेयर. हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं है. तो वो अपना काम करते रहता है विदाउट आवर कंट्रोल. तो कैसे उसको कंट्रोल करें? दैट इज ए वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. आप अचानक से कुछ चीज शुरू करके उसको नहीं कर सकते हो. तो थोड़ा ग्रेजुअल होगा वो, ऐसे आप एक्सेप्ट कर लें. कमांडिंग योर इमोशंस कैसे होगा? क्या हम कमांड कर सकते हैं अपने इमोशंस को करने के लिए, कम होने के लिए? For example, if you want to feel more confident, then you need to be grounded, principled, and courageous in your speech. If you are going to feel more passion in your life, you should start talking and moving more rapidly. For those people who want to feel depressed, simply have to frown, breathe shallowly, slump over, and stay like that. The bottom line is that the manner in which you use your body will end up changing how you feel. Emotion is created by motion. So, हम जब योगा करते हैं ना, इसका आप बॉडी को कैसे यूज करेंगे? आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, वो ऐसे होता है. आप टेक ए डीप ब्रेथ. आपका जो हाथ है इस तरह से आपके थाई के ऊपर रहेगा, and then you put your fingers like that, 2 fingers out here, then one of this finger in the left and your thumb in the right. So breathe in deeply from the left, hold it for some time, and let it go from the right nostril. Breathe in from the right nostril, hold, and then let it go from the left. This is one round. And in 5 minutes time, you can do 9 rounds of such breathing. That is one. The second is Vatsika pranayama. You can do like say in and out while inhaling, while doing up, and while exhaling, you can
do down. This 20 rounds of this you can do. Or you can just move your body like this. This also relaxes, right? So relax. What do you focus on? Whenever there is something which is kind of depressing you, you have to just get your mind out of that. Your language. uh, if the more you use the negative languages, it will make you like that. I'm exhausted or I'm bored. These are the negative statements which will further uh, kind of negate your emotions. So, how to avoid negative emotions is avoid doing the same. जहाँ पे वो ट्रिगर होता है वो सिचुएशंस आप अवॉइड करें. Denial करें. Denial is the process of dissociating yourself from the negative emotions you are feeling by using statements like it wasn't that bad. While you may think that it is perfectly all right for you to go into denial about your negative emotions, the approach unfortunately will increase those negative emotions and will continue to intensify them until you pay attention to the negative emotions. So, how to use negative emotions? क्या नेगेटिव इमोशंस को यूज कर सकते हैं हम? Yes, we can use कर सकते हैं. So every emotion comes from you, and you are the only one who is suited to not only handle them but subdue them as well. So आपका mental strength जो है बढ़ेगा when you accept that these emotions are not coming from outside. किसी ने कुछ किया हो भले ही, but the way we have chosen to feel is our choice. So जैसे ही आप ये सोच लेते हैं, then your emotion comes to your control. With continued practice, you can take advantage of your emotions and have them work for you rather than against you. How to gain emotional control and tackle anger management? So anger is the most perceived way of negativity. It spirals and it affects your state of mind, your health, and your mindset. So the first thing is understanding anger. It is an emotion. It is neither good nor bad. It is a normal emotion and healthy to display when you have been mistreated or wronged. While the feeling of anger isn't a problem, what you do with that anger makes a ton of difference. It has the potential to not only harm you but other people as well. So many people think that when they have hot temper, their ability to control their anger is at its lowest point. However, we have more control over our anger than we think. You can learn how to express your emotions freely without hurting other people. When you can accomplish this, you will feel much better and your needs will be met faster. Mastering the art of anger management isn't an easy task, but the more that you can practice it, the higher the likelihood of it becoming much easier. The importance of anger management. Anger is incredibly damaging. किसी के साथ आप गुस्से में कुछ बोल दिए, it will be there with him forever. And if it kept it within, तो आपके अंदर stress बढ़ जाता है. So this is very important that you should keep your anger in control. कैसे manage कर सकते हैं इसके? Cause of your anger, understand. There has to be an underlying issue that makes you struggle with your anger. Most of the problems that made you angry usually stem from things that you learned when you were a small child. For example, if you grew up in a violent house, you might have picked up the idea that anger is supposed to be used as a tool of expression to get everything your way. High levels of stress and traumatic events would also be some of the underlying factors that make you susceptible to anger. Some people use anger to cover up their feelings of insecurity, vulnerability, embarrassment, shame, and hurt. This means that these people aren't truly angry, but rather connect to certain events that make them angry. Knee-jerk responses are evidence that the temper that is being expressed
is nothing more than a cover up for other feelings and needs. Anger triggers warning signs. So anger requires the fight or flight system in your body. It is incredibly easy to point the finger at others and blame them for the circumstances around you while forgetting that the real cause of your anger is you and how you respond to stressful situations. It has very little to do with the action of others. ये तो समझ लो. Learn effective ways to cool down, taking deep breaths, जो मैंने अभी बताया, and slowly breathing from your abdomen. Exercising helps you to release pent-up energy and can help you approach a situation with a cooler head. Take advantage of all your senses to help you calm down. Massage and stretch areas of tension can help your body relax and ease tension. आपके नावल एरिया में शायद कुछ लग रहा हो, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, आपके सांस शैलो हो रहा हो, ये सब देख लें. Remove yourself from the situation to help you release tension and give you the space you need to reconsider your response. वहां से आप चले जाए. अगर something is very very difficult for you, हो ही नहीं रहा है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है. Mastering conflict resolution with emotional intelligence. ये एक ट्रिक है. Understanding the cause of conflict. ये तो बहुत ही easy है समझना. कोई भी somebody has a different ways of opinion और आपको गुस्सा आया, conflict हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप एक बात सोचो कि आपके पास में कुछ मिस्टेक्स बहुत सारे हैं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, और वही सेम डिसीजन लिया है और बहुत सारा सोचा नहीं, तो उसमें मिस्टेक्स काफी सारे हैं. किसी के रॉन्ग डिसीजंस हुए तो काफी सारा बोला गया उसको कि रॉन्ग था. किसी के बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे थे कि उसको फेल्यूर्स बहुत आए. किसी और के लॉस काफी हुए. ये सारे डिफरेंट सिचुएशन रियल है, राइट? और उस सिचुएशन से वो आए हैं, तो वो क्या करेंगे उस सिचुएशन में? वो चाहेंगे कि अगले ये सिचुएशन ना हो. एंड इफ दैट इज द रियल थिंग, तो आपके साथ अगर ये चारों में से कोई सिचुएशन में से आप नहीं आए, आपका जो लाइफ था वो काफी स्मूथ गोइंग था, देन आप माफ कीजिएगा बट ये सारे सिचुएशंस जो रियल हैं आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में होंगे. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसे परसीव करेंगे? आपको कुछ ह्यूमिलिएशन होगा और आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, गुस्सा आएगा, झगड़ा होगा, ये सारे कुछ हो सकता है. तो क्विक स्ट्रेस रिलीफ कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो आपके साथ वो प्रॉब्लम्स होंगे. बट another positive thing is when you have 4 people saying different things, just ask them, don't talk about problems, solution के बारे में भी तो बात करो. Then when you start asking for solutions, they also will have to overcome their ये negativity. ये तो नेगेटिव है सारी, ये एक्सपीरियंस से आता है और वो एक्सपीरियंस रियल है, और वो चाहते हैं the primary thing why they are coming up with this resistance is कि आप गलती ना करो. तो all of you, आपके टीम में अगर 5 लोग हैं तो 5 people are trying to move on to progress, right? तो आप प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई करके रखिए. सो आपके पास एक के बदले 5 प्लान अभी हैं. सो हाउ इजी नाउ इट बिकम्स to resolve that conflict. Conflict resolution and non-verbal communication. When you are in the midst of conflict, the more critical information is exchanged non-verbal. आप कुछ बोल नहीं रहे होंगे क्योंकि आप लोग काफी सोफिस्टिकेटेड, बट हो क्या रहा होगा आपको बॉडी लैंग्वेज से जो है ना गुस्सा, वो कन्वे हो रहा हो. To connect with your feelings, you need to learn to listen to what is being said as well as what is being felt.
उसने क्या बोला और उसके दिल में क्या चल रहा है, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, the other person is saying something or feeling something, वो feeling, that emotion you need to also feel. That is the kind of listening can inform you, strengthen you, and make it a bit easier for other people to hear you. When you are in the midst of a conflict, you need to pay close attention to the non-verbal communication that is expressed by the other person. This can help you figure out what they are really saying, which in turn allows you to respond in a manner that helps build trust and get to the root of the problem. Emotionally intelligent people have a better chance of success in resolving conflicts because they can put themselves in shoes of the other party. Mastering your interpersonal skills for higher emotional intelligence. So these are this everybody needs this, right? वर्बल कम्युनिकेशन आप काफी पॉजिटिव हो जाए, किसी दूसरे के पास जो पॉजिटिविटी है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, एंड लिसनिंग बहुत अच्छी हो। क्वेश्चनिंग जब आप करें तो आप जानिए कि वो दूसरा पर्सन आपको क्या एडवाइस दे सकता है, हाउ ही कैन गिव you invaluable suggestions. और ये this is a perfect way to begin a conversation. किसी के साथ अगर बात करना है, उनको सुनना है, सामने वाले को इससे अच्छा कुछ भी नहीं लग सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, and the critical component of problem solving involves being able to identify the problem, dissect the challenge to understand it fully, examine the options, and coming up with a strategy for solving the problem. Social awareness, being in tune with the emotions and needs of others, is an essential skill for emotional intelligence. Social awareness makes us embrace and appreciate the success of others. It also helps you identify opportunities. Being able to respond appropriately to a social situation is a clear demonstration that you are operating on a higher level of emotional intelligence. So, many people confuse emotional intelligence and intelligence quotient. When IQ or EQ. When you learn how to command your emotions, you will be able to exercise greater control over your life and ultimately unlock opportunities that would have otherwise remained dead. High emotional intelligence is something that everyone should be working hard to obtain. You need to continue to press on and aggressively pursue your emotional goals. Emotional intelligence teaches and trains you how to better relate with the people around you. With the pace at which the world is quickly becoming a global village, it is more important now that you learn how to listen and interpret the information that you are gathering from those around you. By doing this, you can learn how to structure your response and communicate better with those around you. When you have higher emotional intelligence, you will ultimately find success in both your personal and professional life. So hope this session today has helped you a lot, and we will take this forward from here to create and build a better mindset to be able to unlock opportunities for ourselves. I'll again repeat this simple exercise. When you put the hands in front of you, you cannot see the wall. The wall exists, right? The solutions are there. If you can't see because of these small problems that you have blocked your views with, अपने व्यूज को ब्लॉक करके रखा है, तो आप सामने वाला दीवार भी नहीं दिखेगा. So realize this and discover more opportunities for yourself. Thank you for watching. अगर आपको ये अच्छा लगा है, then नीचे जो भी है लिंक्स है उनको क्लिक करके देखिए. एक लिंक क्लिक करेंगे तो आप मेरे
कम्युनिटी में आ सकते हैं। दूसरा लिंक क्लिक करेंगे तो ट्रस्ट पायलट में जा सकते हैं, मेरी 2 रेटिंग दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे कम्युनिटी में आना, सो आइए, एंड so that this learning can continue. Thank you for watching.